इंडिया में मेजरली बच्चे गैप ईयर लेते हैं टू जेई की प्रिपरेशन करनी है, नीट प्रिपरेशन करनी है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, बट आई वाज लाइक मेरे को एक साल चिल करना है। आई डोंट हैव टू हैव ऑल ऑफ दीज बर्डन ऑन माई हेड। आई वाज ऑलवेज दिस किड जो मतलब लास्ट मोमेंट पे पढ़ता है, अगर कल एग्जाम है तो मैं 4 दिन पहले पढ़ना शुरू करता हूँ एंड समहाउ गॉट मार्क्स, राइट। बट दिस टाइम समथिंग हिट मी कि यार पैसे नहीं लेने पेरेंट्स से एंड वी हैव टू डू समथिंग ऑन आवर ओन। कॉलेज स्टूडेंट्स शुड नो दैट 25-30 हज़ार की नौकरी से खुश हो जाना इज नॉट योर लाइफ गोल। यू हैव टू डू समथिंग बेटर इन लाइफ एंड लाइफ में थोड़ा अनकन्वेंशनल चीजें करो, मतलब जो नॉर्मल रोड मैप बना हुआ है सबके लिए। Hi Divye Agarwal, welcome to the White Collar Podcast. I'm very honored to have you in this episode. So, how are you doing? I'm fine, Puneet. Thanks for inviting. It's an honor for me to be here. Cool, cool. Let's start the podcast and let's evaluate the audience through our own knowledge. So, we'll start the podcast with tell us something about yourself. What are you doing currently, and how things are going? So, Puneet, currently what I do is I run a business. It's a content marketing business where we help YouTubers grow on YouTube, and we have worked with the biggest of brands and the biggest of creators in India. So, what we do is we manage them end to end. So, from ideation to strategy to editing to thumbnails, we do everything. Our USP is they just have to shoot. That's it. The rest all is taken care by us. Okay, okay. That's great. And currently having a team of 20 plus people, and we're thinking of expanding to 35 plus by the end of the year. That's a big goal of yours. And how old you are? I just turned 20 this year. Oh my God. How how this big company or this business at just 20 give us something flashback. How did you start it? Yeah, I started when I was 15 or 16. I don't remember exactly, but when I was 15 or 16, so it was the month of Feb or March. I don't remember. March मेरा birthday था. I have my birthday on 31st March. Okay. And I wanted to throw a party. Every time जब मैं party throw करता था to friends, तो I used to ask money from my parents, ठीक है? But this time something hit me कि यार पैसे नहीं लेने parents से and we have to do something on our own. तो मेरे पास एक लैपटॉप था, इंटरनेट कनेक्शन था, एंड एज अ नेव किड यू वेंट टू गूगल एंड सर्च हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, राइट। एंड 1000 चीज़ें आती हैं। एंड उस टाइम पे जब मैं अभी 2018-17 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उस समय जितना अभी फ्रीलांसिंग मेन स्ट्रीम्ड है उस समय नहीं था, राइट। सो आई Right. वेंट ऑन द गूगल सर्च, बहुत चीज़ें आई, कैप्चा कोड, सर्वेज, ऐप डाउनलोड, बहुत अलग अलग चीज़ें, बट नथिंग सीम्स टू वर्क। एंड देन आई स्टक्ड ऑन अ चैनल जो फ्रीलांसिंग के बारे में सिखाते थे। आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द चैनल, बट कुछ संदीप नाम का बंदा था विच यूज टू टीच फ्रीलांसिंग टू स्टूडेंट्स, टू पीपल। Okay. Hmm. आई स्टार्टेड वॉचिंग दैट चैनल। उनका फेसबुक ग्रुप था, आई जॉइन दैट एज वेल। एंड वहाँ से स्टार्ट हुई। आई स्टार्टेड विद आर्टिकल राइटिंग। माई मेरा मेरा पहला गिग आर्टिकल राइटिंग का था। व्हाट हैपेंड वाज कि फेसबुक पे किसी ने लिखा था वी वांटेड अ आर्टिकल राइटर फॉर आवर टेक वेबसाइट, राइट, जो रिव्यूज होते हैं फोन के, या फिर जो 5 टिप्स होते हैं ये करने के, वो कर लाइक 5 टिप्स टू जेल ब्रेक, वैसे जो आर्टिकल्स होते हैं उसके लिए। एंड एज अ किड आई वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन टेक, राइट। Okay. तो आई अप्लाइड फॉर इट, आई विल डू इट। एंड फिर वो मेरे को 20 आर्टिकल लिखने मिला था फॉर 4000 रुपीज। एंड 4000 रुपीज फॉर अ 16 or 15 year old kid इज अ बिग अमाउंट, Yeah, मतलब yeah. काफी बढ़िया। दिस इज हाउ बिल्कुल. आई स्टार्टेड, राइट। दिस वाज Okay. माय फर्स्ट किड। दैट्स ग्रेट. तो आपको इंस्पायर्ड क्या किया कि ये पूरी जर्नी से फिर आपने जो आर्टिकल राइटिंग से आपने शुरुआत करी एंड नाउ यू आर ओनिंग अ गुड बिजनेस. सो हु इंस्पायर्ड एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू? Yeah, nothing very specific. I was always having this mindset of making money, right? Because I wanted to be financially independent as soon as possible.
because Okay. when you get financially independent, you get the freedom to do things, right? And having money is a privilege, and having money changes your mindset as well. तो पहले तुम चार Yeah. हजार कमाते हो, फिर तुमको लगता है कि तुम 40,000 कमा सकते हो, देन तुमको लगता है तुम 4 लाख कमा सकते हो, एंड देन द होल माइंड हैव शिफ्टेड टू 40 लाख, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, तो वो माइंड आगे आगे बढ़ता जाता है, राइट? सो वेन वर Yeah. लाइक जो भी अभी कोई भी 40,000 की जॉब कर रहा है तो उसका एस्पिरेशन होगा कि 1 लाख कमाए। वो 1 लाख की जॉब करेगा तो उसका एस्पिरेशन होगा कि शायद 2 लाख कमाए। तो Hmm. दैट हंगर फॉर मनी नेवर स्टॉप्स। जो ये सोशल मीडिया पे होता है, मनी डजंट मैटर, ये एक्सेट्रा वेसेट्रा कहने की बात है, बट व्हेन यू व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, मनी डज मैटर, एंड इट बाइज यू अ पीस ऑफ माइंड। वो कुछ और खरीदे ना खरीदे, यू स्लीप विद अ पीस ऑफ माइंड कि हाँ, आई हैव समथिंग टू रिलाई ऑन, एंड Yeah. मनी Yeah. गिव्स यू फ्रीडम, राइट? Money gives you freedom. So main inspiration यही थी। I was, and as a kid I was always interested in business and doing things on my own. So external inspiration तो ज़्यादा कुछ नहीं थी, but whatever it was just my internal inspiration coming. That's great. So आपको जब पता चला आपने स्टार्ट किया from article writing, okay, and you shifted to video editing. How did you figure out कि article writing is not working for me? Let us try something out. This. Yeah, when I started in 2016 or 17, I'll tell you, article writing was never something I wanted to start with. It's just Okay. that मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन टेक, तो आर्टिकल राइटिंग का मेरे को पहला गिग मिल गया। उसके बाद तो आई Okay. हैव रेयरली डन आर्टिकल राइटिंग। मेरा जो मेन फोकस था, दैट वाज ऑलवेज ऑलवेज इनटू वीडियोस एंड कंटेंट। Okay. सो इट वाज Okay. नेवर अ माइंडसेट शिफ्ट, इट्स जस्ट वन कोइंसिडेंस कि जो मेरा पहला गिग था वो आर्टिकल राइटिंग का गिग हो गया, राइट? सो आई डोंट हैव टू Hmm. शिफ्ट दिस माइंडसेट। Hmm. So, did you had your agency, right? You had your agency. Tell us something about राइट। your agency and what did you do for that agency? So when I was 17, I guess 17 or 18 का था मैं, 18 का था, जो ये लॉकडाउन की बात है। I was 18 and we were all at home। मेरे 10th के बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हुए थे उस समय, and we were all at home and having the experience of 3 years or 3 or 2 years, I don't remember exactly, of being into video editing and being into this content ecosystem। आई थॉट कि जितने मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जितने मैं क्लाइंट को सर्व कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, इट्स नॉट हैपनिंग, राइट? क्योंकि एज अ वीडियो एडिटर इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब एंड तुम नहीं कर सकते हो सबको सर्व, राइट? सो Yeah. दैट वाज वन माइंडसेट शिफ्ट कि अब मेरे को लोगों को हायर करना पड़ेगा। आई हैव टू हायर फ्रीलांसर्स, आई हैव टू हायर पीपल टू हेल्प मी विद प्रोजेक्ट एंड टू हेल्प स्केल ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो दैट्स व्हेन आई came with the concept of having started an agency, right? Okay. Ran that agency for 1 year. I did not run it more than a year or so because the thing I realized is कि video editing में you do not get the output, right? मतलब वो मजा नहीं आता है because you do not see the results editing में। Hmm. And that's the reason why I started being more into the YouTube side of things वहाँ पे, because you see the numbers, you see the subscriber Yeah. base growth क्या हो रही है। Editing में you do not Hmm. see that, you see a product। उसमें ना वो इंस्पिरेशन, मतलब वो नहीं आती, प्राइड नहीं आता है एक तरीके का। Hmm. तो आई डिड दैट फॉर 1 year, स्केल्ड इट टू $100K, दैट्स अराउंड 80-90 लाख रुपीज का ARR, एंड सोल्ड इट आफ्टर अ ईयर। आई वाज वेरी वेरी बोर्ड ऑफ इट, राइट? तो दिस इज Okay. हाउ वो एजेंसी स्टार्ट हुई थी। Okay. Okay. So, tell us something about your studies because uh, everyone wants like कि मैं पहले पढ़ लूँ and after that मैं अच्छी job कर लूँगा and will live my life. But your path and your journey is very different. What is about your behind your journey, the journey of your studies? यार, बचपन से आई वाज दिस मीडियोकर किड जिसके ना अच्छे मार्क्स आते थे, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे और बहुत खराब मार्क्स भी नहीं आते थे। सो आई विल गो बाय 10th। तो जो मेरे 10th के बोर्ड्स होते हैं, आई वाज फ्रॉम ICSC, ठीक है, ICSC बोर्ड का Okay, हूँ मैं 10th में। एंड मेरे 10th के बोर्ड में आई स्कोर्ड आउट 93.6%, ठीक है। cool. एंड आफ्टर 10th आई टुक कॉमर्स। आई डिड नॉट टेक साइंस इंटेंशनली बिकॉज आई न्यू कि मेरे को साइंस में टाइम नहीं मिलेगा टू वर्क ऑन माई ओन थिंग्स। आई वेंट फॉर कॉमर्स। मेरे बोर्ड्स लास्ट ईयर ही खत्म हुए,
like I gave my exams in 2022 and similarly I scored 93.2%. So वो चीज़ वहाँ पे भी थी एंड आई वाज ऑलवेज दिस किड जो मतलब लास्ट मोमेंट पढ़ता है, अगर कल एग्जाम है तो मैं 4 दिन पहले पढ़ना शुरू कर रहा हूँ एंड समहाउ गॉट मार्क्स राइट। तो मेरी जो Okay. लर्निंग कैपेसिटी है नेचुरली वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। इफ आई वांट टू लर्न समथिंग आई लर्न इट वेरी वेरी क्विकली। Okay. सो Okay. दिस इज दी होल गेम। वो एक नेचुरल एबिलिटी है मेरे में कि मैं बहुत कम समय पढ़ के ज़्यादा आउटपुट निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। So Okay. and honestly I've never cared about my marks। वो अगर ना 80s भी आते तो मेरे को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं बिकॉज आई डोंट थिंक इट डज मैटर टू मी एट ऑल। बहुत लोगों के लिए मैटर करता होगा, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम बट फॉर मी इट्स नॉट अ फैक्टर टू कंसिडर। एंड द गुड पार्ट वाज माय पेरेंट्स वर ऑलरेडी वेरी चिल्ड कि तुमको जो करना है करो, जो स्कोर करना है करो, दे डोंट माइंड। Hmm. मैं बहुत फ्री Hmm. था घर पे राइट। आई हैड दिस फ्रीडम। तो दिस वाज अ प्रिविलेज फॉर मी एज वेल व्हिच मेजॉरिटी ऑफ द किड्स डोंट हैव। सो वो Hmm. एक रीजन, वो भी एक रीजन है व्हाई आई एम हियर Okay. बिकॉज आई डिड नॉट Okay. हैव प्रेशर ऑफ गेटिंग मार्क्स। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आई वाज लाइक जब पढ़ना है पढ़ सकता हूँ, जितना स्कोर करना है इट्स ओके। Hmm. 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 So after college, after school, what did you decide? आपने क्या सोचा कि क्या करना है? सो आई डिड माई 12th लास्ट ईयर राइट Hmm. एंड आई टुक अ gap year just to have a break, just to Okay. explore more things and just to give time on the things I'm already doing, right? Because a Okay. gap year would not change me as a person. I was 19, I was 18, एक साल से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक साल में जो मेरे पास फ्री टाइम रहेगा ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल, नॉट गोइंग टू कॉलेज एंड फिगर आउट लॉट ऑफ मोर थिंग्स जो मेरे को लॉन्गर रन में ज्यादा हेल्प करेगा। Hmm. एंड आई डिड दैट एंड आई थिंक मेरा गैप ईयर भी 1 महीने में खत्म हो रहा है एंड 1 महीने में आई हैव टू जॉइन सम कॉलेज। सो वो भी चीज़ है, आई एम स्टिल थिंकिंग ऑफ दैट। सो मैंने 12th के बाद गैप ईयर लिया था 1 साल का टू जस्ट एक्सप्लोर थिंग्स। इंडिया में मेजरली बच्चे गैप ईयर लेते हैं टू जेई की प्रिपरेशन करनी है, नीट की प्रिपरेशन करनी है, इसकी प्रिपरेशन करनी है। बट आई वाज लाइक मेरे को एक साल चिल करना है। आई डोंट हैव टू हैव ऑल ऑफ दीज बर्डन ऑन माई हेड। तो मैंने उसके लिए Hmm. गैप ईयर लिया था एंड आई थिंक एवरीवन शुड टेक अ गैप ईयर रिगार्डलेस उनको जेई या नीट निकालनी है नहीं निकालनी है बिकॉज इट गिव्स यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। बट मेक श्योर इफ यू आर टेकिंग अ गैप ईयर इट्स वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल प्लान्ड, नहीं तो फिर वो एक साल भी वेस्ट हो जाएगा एंड विल ब्लेम इट ऑन योरसेल्फ। Hmm. Hmm. So what are your learnings with your gap year? आपका कैसा learning रहा है एक अभी जो end होने वाला है? So what are the your key takeaways? I think the key takeaways from my gap year was कि एक तो I got this opportunity to think more with myself, right? When you're in school or when you're in college तो तुम सुबह से शाम तक स्कूल कॉलेज में ही होते हो, देन उसके होमवर्क होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, तुम्हारा दिन खत्म हो जाता है। Hmm. You don't Hmm. have this time to reflect on yourself, right? So firstly I got that time to do much more things. Even if I Hmm. want to start something, I have in the time, even I have to go to a gym, तो मेरे को उतना हिचकिच नहीं करना पड़ेगा कि यार स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, असाइनमेंट्स करने हैं, 10 चीजें हैं राइट। सो आई गॉट टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन माई ओन थिंग्स। मैंने लास्ट 12 साल में क्या किया है, मैं लास्ट 5 साल में और अगले 5 साल में और क्या कर सकता हूँ, व्हाट्स द पोटेंशियल। एंड द गुड थिंग अबाउट इज कि एक साल में आई ट्रैवल्ड अ लॉट, तो आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल। And when you met a lot of people and when you network with a lot of people and people from your own industry got to know you, it helps you eventually in some way or the other and वो compound होता है right। So ये तो चीज है कि when you take a gap year it helps you reflect on yourself and if you use it very very well in the networking opportunities as well, तो तुम वहां से बहुत फायदा ले सकते हो। प्लस थर्ड इज यू कैन परस्यू योर हॉबी जो तुम बहुत साल से नहीं कर पा रहे थे, यू कैन ट्राई दैट इन 1 ईयर एंड सी कि काम करता है तो यू कैन कंटिन्यू। बट फिर Hmm. यू हैव दैट लर्निंग राइट। Hmm. 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 Exactly. So network is your net worth, right? राइट। कोई एग्जाम्पल ऐसा कि जो आप नेटवर्क की वजह से आपको लेवरेज मिला है उस चीज का? So when I was in 12th, right? When I was in 12th, I was working with Ashok Ramachandran, if you know. Yeah. I don't remember if you know. He's the CEO of Schindler India, right? Hmm. So we were working together one on one, and he was the CEO of a company who's doing really, really good in India, and it's a big company, it's a big corporate. And I was working directly on his YouTube channel, right? And through him, I got to know a lot of people.
and through him a lot of people from his industry, from the level he was, got to know me. And from that I got a lot of opportunities as well, right? Even though I take a name here, right, Ashok Ramachandran, everybody knows. So it comes with a lot of credibility, right? Hmm. And even with a lot of people I work with right now, when this when you go to meet them and they're sitting with four more people, you get to know Hmm. all four of them, right? And वहां से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज निकल के आ जाती है इफ यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग वैल्यूएबल, या फिर तुम उनके कोई काम के हो, राइट? Hmm. अगर तुम Hmm. उनके Hmm. काम के नहीं हो, यू डोंट हैव समथिंग टू गिव बिफोर टेकिंग, तो आई थिंक इट्स ऑफ नो यूज. Hmm. Hmm. तो क्या लगता है कि आपने 1 साल का गैप लिया बट स्टिल यू वांट टू ज्वाइन कॉलेज while you are earning XYZ amount in your life, but you still want to want to join college. Bro, the reason is number one, I don't want to miss on the college experience. मैं 15 साल बाद जाके ये नहीं बोलना चाहता यार शायद कॉलेज चला गया होता. I had missed this in my life, right? Hmm. Second is when you go to a college, you network. I will not say network. You interact with a lot of people जो Hmm. अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं. कोई Hmm. कर्नाटका से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई यूपी से Hmm. आ रहा है. इट्स अ वेरी डाइवर्स थिंग. सो वहां Hmm. से यू बिल्ड अ पर्सनालिटी एज वेल, राइट? एंड आई Hmm. मे नॉट नो, शायद मैं 1 साल 2 साल कॉलेज जाके मैं ड्रॉप आउट कर दूंगा, राइट? बट आई Okay. वॉन्ट टू हैव दैट 1-2 साल का एक्सपीरियंस, राइट? कि कॉलेज एग्जैक्टली होता क्या है एंड हाउ डज इट हेल्प, वहाँ की स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होता है. सो आई डोंट वांट टू मिस ऑन दैट एक्सपीरियंस. देयर इज नो रीजन कि मैं कॉलेज, आई एम नॉट गोइंग फॉर डिग्री, आई एम नॉट गोइंग फॉर द कोर्स, आई एम जस्ट गोइंग फॉर द एक्सपीरियंस अ कॉलेज इन इंडिया प्रोवाइड्स. Hmm. What you want to pursue? कौन सा आप कोर्स लेना चाहेंगे आगे? Not decided, यार. Honestly, not decided. Like Okay. clueless, Okay. but not decided. Course doesn't matter. And one more reason of going to college is I'll move out, right? I'll live on my own. So that Hmm. is one more reason as well, and that would enhance your personality in some way or the other. When you start living on your own, जब तुम खुद के बर्तन धोते हो, खुद के कपड़े साफ करते हो, you get you start realizing how grateful you are for your Hmm. parents and for someone doing the work for you when you were at home, right? And how hard it is. And वहां से you build a Hmm. deeper connection with the people you have in life. That's a great thought process. कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या ओपिनियन है टू मेक देयर कॉलेज लाइफ वर्थ इट एंड मोर मीनिंगफुल? I think the majority of the college crowd which I have interacted with as well is running behind certificates, right? Hmm. And not experiences, right? If I just put out a LinkedIn post, Hmm. कि I have this thing and I'll give a certificate at the end. Okay. I'll get thousands and thousands of applications, but no one would ask कि क्या काम है, कैसे करना है. They jump on the certificate, right? They do not jump on the experience. So I think the willingness to work and to learn and experience something is something missing in the college students. Plus, second, I think it's the educational system जो fault में है कि they get allotted with a lot of assignments and homeworks जो भी रहता है, and उसके Hmm. बाद उनको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, right? Hmm. बहुत टाइम Hmm. नहीं मिलता है. वहाँ पे कुछ कर सकते हो, नहीं कर पाते. वी हैड दिस member in our team who and she was very very good at editing, right? And she did not continue because of the pressure she was getting from the college, right? And I'll tell you, if she had continued, she would have Hmm. earned 2x or 3x the amount of money the college placements would give her, right? So Oh. this is something which college students should know, that 25-30 हजार की नौकरी से खुश हो जाना is not your life goal. You have to do something better in life. That is one, that is two or three, whatever the point, I don't remember. But हाँ ये चीज़ है. And I think कॉलेज में हम बहुत मस्ती करते हैं. Like I've seen my friends are in college right now because I took a gap year and they did not. Hmm. Hmm. And I see them बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मजा आता है and करनी भी चाहिए, right? You have to do it. But at some point of time you have to realize कि मस्ती भी मतलब
एक लिमिट में होनी चाहिए। अब तुम 24 घंटे क्लब्स में जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, दैट वुड नॉट वर्क, राइट? हम्म दिस अ पार्ट हम्म ऑफ योर डे जो तुमको लर्निंग, या फिर यू हैव टू डेडिकेट इट टू द एक्सपीरियंसेस यू आर गेटिंग प्रोफेशनली, आई एम सेइंग, which which हम्म which is lacking. And fifth is, I think ये कॉलेज में नहीं सारे बच्चों में लैक होता है कि दे थिंक अ लॉट बट दे नॉट एग्जीक्यूट, कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, बट नथिंग कम्स इनटू एक्शन। कि मैं, मेरे बचपन का दोस्त है, हम लोग बड़े होंगे, स्टार्टअप बना लेंगे, ये बेचेंगे, वो बेचेंगे, बट एक्शन में कुछ नहीं आता है, राइट? तो हम्म हमेशा एग्जीक्यूट करना इम्पॉर्टेंट है। नो मैटर यू फेल यू सक्सीड, आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन यू विल लर्न समथिंग, राइट? तो एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो कितने भी बड़े स्केल पे हो, चाहे वो कितने भी छोटे स्केल पे हो, बट यू हैव टू एग्जीक्यूट थिंग्स। लाइक छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, बट ट्राई एग्जीक्यूटिंग, राइट? हम्म मेक सेंस And college मेक सेंस students should college students should start earning money either by be when I started, it was hard to earn money online, but हम्म 2022, 2023, 2023, it's very easy to earn money online if you have any basic skills, it's very easy to earn. At least तुम महीने के 10-15 हजार तो बहुत इजीली कमा सकते हो, which is the cost, I think, जो कॉलेज स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से मांगते हैं पर मंथ टू सर्वाइव, हम्म राइट? हम्म हम्म And you should have that independence, you should work on that independence. मेक सेंस। तो अभी जो हर एक स्टूडेंट है उसे फ्रीलांसर बनना चाहता है, जैसे कि अभी आपने कहा तो फ्रीलांसिंग करो, फ्रीलांसिंग करो, इज दैट द सेफ ऑप्शन टू बी फाइनेंशियली सिक्योर? See, I'm not saying कि freelancing ही करो, I just said कि to cover the monthly expenses you're getting from your parents, हम्म start with freelancing, right? हम्म And once you see after 2 years or 3 years, once you see that it's becoming stable for you, हम्म you have built that muscle, then हम्म you have the option, either you go to the job which is paying 50,000, or either you हम्म do freelancing which is paying 5 lakhs, right? हम्म And हम्म good things never comes without risk, right? तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। एंड इफ यू हम्म आर स्किल्ड इनफ, यू आर स्किल्ड इनफ, तुम्हारे मार्केट में कोई कमी नहीं है जो तुम्हें काम नहीं दे। मार्केट में जो स्किल्ड लोग हैं उनकी बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, इफ यू आर स्किल्ड, इफ यू आर एक्सपर्ट एट समथिंग। सो आई थिंक risky better, but you should take it, because if it did not work out, you already have the experience of 3-4 years of working with someone, या फिर हम्म freelancing, and you could easily jump on a job in the same niche, right? So I think it's a riskier bet, but at least college students should try. But जो working professionals हैं, and इवन अगर जब तक उनको उनकी सैलरी का 2x या फिर सेम अमाउंट नहीं मिलता है फॉर अ ईयर फ्रॉम फ्रीलांसिंग, तब तक वो क्विट नहीं करे अपनी जॉब, बिकॉज इट्स रिस्की। तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें कब छोड़ के चला जाए, नहीं पता, राइट? एग्जैक्टली या सो आई विल थ्रो यू वन bird. Okay. And you have to relate that word with three different situations. Okay. The word is ठीक है। grow. Grow. The word is grow. And the situation is how to grow as an individual. आई थिंक टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल यू हैव टू लिव विद पीपल हु यू एस्पायर टू बी, और जो तुमसे 2 लेवल ऊपर है, राइट? Hmm. अगर तुम अपने जैसे लोगों के साथ रहोगे, आई एम नॉट सेइंग अपने फ्रेंड साथ मत रहो, ऑब्वियसली रहो, बट हैंग आउट विद पीपल एज वेल जो तुमसे 2 लेवल ऊपर है, 3 लेवल ऊपर है, राइट? विच यू Hmm. एस्पायर टू बी, जो तुम्हारा नेक्स्ट गोल है उनकी तरह बनना। तो यू विल गेट द माइंडसेट चेंज, कि वो क्या करते हैं अलग, हाउ दे डू दैट, राइट? Hmm. सेकेंडली इज फॉलोइंग पीपल ऑन सोशल मीडिया, इवन इफ यू कैन नॉट हैंग आउट, विच यू एस्पायर टू बी, कि एटलीस्ट वो क्या कर रहे हैं, डू नॉट, आई एम नॉट सेइंग एंगेज विद देयर कंटेंट, एंगेज विद देम पर्सनली ऑन डीएम्स, राइट? वो कनेक्शन बनाओ वहां से। जब तुम वहां से वो कनेक्शन बनाओगे ओवर द इयर्स, तब भी तुम उनसे मिलके, एंड देन यू विल इंटरेक्ट पर्सनली, राइट? दैट इज Hmm. वन वे टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। आई थिंक सेकेंड वे इज लर्निंग टू बी क्यूरियस एंड लर्निंग टू बी हम्बल। बहुत लोगों को Okay. देखा है मैंने, दे आर क्यूरियस, दे आर टैलेंटेड, बट दे आर नॉट हम्बल। बहुत ईगो रहता है अबाउट व्हाट दे डू, बट दे डोंट रियलाइज कि वर्ल्ड इतना बड़ा है, नोबडी केयर्स अबाउट व्हाट दे डू, राइट? वो ईगो लेके तुम Hmm. कहीं नहीं जाओगे, ईगो लेके ओनली ओनली ruin the relationships you're having, and that comes to the Hmm. third point is building relationship.
लर्न द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन की बातें कैसे होती है, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं हम्म बोलना चाहिए, राइट। कैसे किन से बात करनी चाहिए, अगर कोई तुमसे इतना बड़ा है तो तुम उनसे कैसे बात करोगे, राइट। हम्म नो मैटर हाउ रिच यू आर, हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, it all boils हम्म down to how humble you are at the end, right? So I think to grow in an individual, learn and try to interact and live with the people who you aspire to be, जो तुमसे एक दो लेवल ऊपर है, right? Learn how to converse, courses देखो, but the point is courses देखने के बाद उसको implement करो, वो खाली इम्प्लीमेंट कॉपी में करो। लिख के मत, हम्म राइट। वो लिख के वहीं पे रह जाता है। आई थिंक अभी के जमाने में एवरी वन वॉचेज इंफोटेनमेंट कॉन्टेंट, राइट, कि ग्रो कैसे करे, 4 टिप्स टू ग्रो, 5 टिप्स टू ग्रो, 6 टिप्स टू ग्रो, बट 1% ऑफ इट इम्प्लीमेंट्स इट आउट ऑफ 100 पीपल, एक एक बच्चे इम्प्लीमेंट करता है, राइट, शायद हम्म वो भी नहीं करता होगा, पॉइंट कुछ होगा रेशियो। वी ऑल नो कि इंटरनली हमको भी पता है, तुमको भी पता है क्या करना है। देयर इज अ सिम हम्म देयर इज अ सिंपल पाथवे टू सक्सीड इन लाइफ, लेकिन वो हम्म सिंपल है, वो इजी नहीं, राइट। सबको पता है क्या करना है, मेहनत करो, हम्म काम करो, सीखो, रिपीट करो, एंड इट विल ऑल कंपाउंड, बट किसी को करना नहीं। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एग्जीक्यूशन, विच आई सेड प्रीवियसली, कि हम्म लर्न टू एग्जीक्यूट। जो फियर ऑफ फेलियर है ना, वो हटा दो। नोबडी केयर्स अबाउट योर फेलियर, तुम क्या कितने में फेल हुए, क्या फेल हुए। इवन आई आज जिसको 10th में 50% आए थे, उसको लोगों ने 1-2 महीने ताना मारा, अगर वो भी कॉलेज में, नोबडी वुड आस्क तुम्हारे 10th में कितने आए थे। द सेम गोज विद योर फेलियर। तुम एक बार फेल हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टैंड अप, 1 महीने का ब्रेक लो, 1 महीने लोग तुम्हें ताना मारेंगे, हंसेंगे, कुछ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बट दैट बिकम्स योर मोटिवेशन टू प्रूव देम रॉन्ग इन द नेक्स्ट स्टेप यू आर टेकिंग, राइट। हम्म सो आई थिंक लर्निंग टू फेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फेल होना भी चाहिए। अगर आई डो नॉट सी एनी सक्सेसफुल पीपल हु हैव नॉट फेल्ड इन लाइफ, राइट। एंड हम्म अगर तुम कॉन्टिन्यूसली सक्सेसफुल हो रहे हो, तो दैट जस्ट बूस्ट योर ईगो। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, बट अगर तुम्हें कभी रॉक बॉटम हिट नहीं किया है, तो यू विल हैव दैट ईगो कि यार मैं तो कुछ भी कर लूंगा, सब इजी है। बट आई थिंक फेलिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज सक्सीडिंग इन लाइफ, एंड इट्स ओके टू फेल। उससे डरना नहीं है, लाइक वी डू नॉट सेंड ईमेल, वी डू नॉट सेंड मैसेजेस की रिप्लाई नहीं आएगा, नहीं आएगा। एंड इवन दो रिप्लाई आ गए, दैट्स वेल एंड गुड, बट वी कुड ट्राई ना, कि रिप्लाई आया आया, नहीं आया तो नहीं है, क्या बात हो गया। इवन नो बट नो नो बट भाई, नोबडी हैज द टाइम टू जज यू। वो तुम्हें 5 मिनट जज करेंगे, बोलेंगे, एंड यू हैव टू बिल्ड दैट मसल 5 मिनट के लिए भी, कि नोबडी डेयर्स टू डू दैट। Makes sense, makes sense. That's very thoughtful and deep. Okay. And the second situation is grow any small indie business. आई थिंक द फंडामेंटल ऑफ ग्रोइंग अ स्मॉल बिजनेस, सी when you're a small company like we are, when you're a small company you have a limited amount of customers or clients, right? And it's very very important to build a strong relationship with them. Why? Because even though at times you'll fuck at work, right, but वो करने से, if you have a good relationship with clients and you have built that over the years, तो तुम्हें वो immediately छोड़ के नहीं जाएंगे, they'll give you a chance, right? And when you build relationship with them, जो 10-11 लोग तुम्हारे clients हैं initially, और जो भी तुम्हारे customers हैं, they have the same amount of network of people who are your next big clients. So when you Hmm. give them a proper service or good product, the the power which refer brings to you is immense. जो कंपाउंड होगा वो रिलेशनशिप ओवर द इयर्स इज इमेंस। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हाउ यू वेंट फ्रॉम 11 क्लाइंट टू 22 टू 40 टू 60। Hmm. फिर तुम्हारे पास एक समय पे कमी नहीं रहेगी। You are where because of them, like you are here because of them, they have trusted you initially, right? So I think that is one. And second is never being afraid of reaching out to people, right, for help, for anything. Even if you do not get help, अगर सब मैं 100 लोग को रीच आउट करता हूँ, 70 ने मना कर दिया, I'll still be I'll still get help by 30 more people, right? So I think not afraid of being reaching out to anyone. एंड स्मॉल बिजनेस में ना बहुत चीजें मैं देखता हूँ आजकल, जो ट्रेंड चल रहा है कि नोशन पे डॉक बना लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये टूल, वो प्लगइन, एक्सेट्रा वेसेट्रा। भाई इफ यूर अ स्मॉल बिजनेस,
और अगर तुम 1-2 करोड़ का भी रेवेन्यू कर रहे हो, 1-2 करोड़ को आई कंसिडर एज अ स्मॉल बिजनेस, राइट, अगर तुम उस स्केल तक भी कर रहे हो, तुम्हारा काम व्हाट्सएप चैट से भी चल सकता है। यू डोंट हैव टू डू फैंसी थिंग्स कि प्रोजेक्ट हम्म मैनेजमेंट टूल बना लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। फर्स्टली स्टार्ट मेकिंग मनी एंड देन हम्म जंप ऑन टू ऑल दो फैंसी थिंग्स। 10-15 लोगों को मैनेज करने के लिए असाना, स्लैक, नोशन की नीड नहीं है, वो व्हाट्सएप मैनेज हो सकते हैं। एंड इवन यू नो वी नो कि अगर अचानक से हम स्लैक पे आ जाएंगे, हम स्लैक खोलेंगे भी नहीं दिन में, बिकॉज वी आर नॉट हम्म हैबिटेटेड टू दैट। व्हाट्सएप खोलने ज्यादा हैबिटेटेड। तो जितने ये फैंसी चीजें है ना, ये टूल वो टूल, फॉक इट ऑल। बिल्ड बिजनेस भाई व्हाट्सएप से भी बन सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन वहां भी हो सकती है। तुम्हारा हम्म 1 लाख का रेवेन्यू और तुम स्लैक और इन सब चीजों पे जंप कर रहे हो। डो नॉट डू दैट। फर्स्ट बिल्ड योर बेस, अच्छा रेवेन्यू बनाओ, एंड देन व्हेन यू सी कि भाई व्हाट्सएप से नहीं मैनेज हो पा रहा है, देन यू गो ऑन टू दीज फैंसी थिंग्स, राइट। बट इनिशियली हम्म उस पे हाइप बना के बिल्ड करना इज समथिंग जो लोगों को इंस्टाग्राम स्टोरीज पे काफी कूल लगता है, फोटो लेके मैकबुक के डालना, बट in reality I think doesn't work. Makes sense. That is great. Makes sense. So, the last situation of the grow word is grow a YouTube channel. यार, growing a YouTube channel, I think, mm, if you're starting out, it mostly depends upon what kind of content you are making, and you should ask yourself a question कि जो तुम content बना रहे हो, would people watch it, ठीक है। एंड जो फंडामेंटल्स हैं वो तो है ही कि कंसिस्टेंट रहना है, अच्छे वीडियोस बनाने हैं, ये वो ऑल जो चीजें चलती आ रही है, दैट इज इट। बट यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज इट वेल। तुम्हें इतना स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट यू आर एक्चुअली मेकिंग। इफ यू सी अ लॉट ऑफ वीडियो चैनल, दे स्टार्ट वेरी रैंडमली कि ये भी कर ले, एक ही चैनल में हम फिनेंस भी सिखा लेंगे, हम एक ही चैनल में व्लॉग्स भी कर लेंगे, हम एक ही चैनल में टेक्नोलॉजी भी सिखा लेंगे। बट इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, बिकॉज when you are a finance core channel, you attract the audience जिनको finance देखना है। when you are a vlog core channel, तुम उस ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हो जिसको व्लॉग देखना है। व्हेन यू आर टेक चैनल, तुम उस ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हो जिनको टेक देखना है। व्हेन यू कंबाइन ऑल ऑफ दीज इन वन चैनल, तो हो सकता है तुम्हारे फाइनेंस पे जो व्यूज का रेशियो है बहुत कम हो टेक से, या फिर टेक पे जो व्यूज का रेशियो है बहुत कम हो फाइनेंस से। तो यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है। आई थिंक which Aryan says, Aryan my co-founder, which he says is कि if you're coming home midnight 10 p.m. और 11 p.m. और तुम एकदम थके हुए हो, एकदम थक के ऐसे हो कि तुम्हें नींद आ जाएगी, ठीक है, व्हाट्स दैट वन थिंग जिसके बारे में तुम बात करना पसंद करोगे? व्हाट्स दैट वन थिंग? दैट इज योर हम्म नीश, राइट। दैट इज योर नीश, द थिंग यू लव। डू नॉट डू एनीथिंग फोर्सफुली कि फाइनेंस चल रहा है तो हमें फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ, ये चल रहा है तो मैं वो बन जाता हूँ। मेक थिंग्स यू लव, ठीक है, बिकॉज वो तुम्हारे खुद से निकलेगा एंड वुड नॉट नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन टू डू दैट, बिकॉज तुम प्यार करते हो उससे, राइट। आई थिंक हम्म दैट इज वन विच पीपल शुड कंसिडर, एंड दैट इज वन। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, कि कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा यूट्यूब पे। एंड थर्ड इज योर थंबनेल एंड टाइटल्स मैटर्स अ लॉट, बिकॉज व्हेन समवन इज क्लिकिंग अ वीडियो, दे डू नॉट नो वीडियो में क्या है, वो उनको हम्म क्लिक करके पता चलेगा। बट द हम्म रीजन दे आर क्लिकिंग द वीडियो इज बिकॉज ऑफ थंबनेल एंड टाइटल्स। या तो तुम थंबनेल देख के वीडियो क्लिक करोगे, या तो तुम टाइटल पढ़ के वीडियो क्लिक करोगे, या तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर की वीडियो है इससे तुम क्लिक करोगे। देयर कुड बी थ्री थ्री फोर रीजन, या फिर टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जो भी है। हम्म 3-4 रीजन है। तो वीडियो की पैकेजिंग काफी 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 अच्छी होनी चाहिए। तुम कुछ नया नहीं बना रहे हो, जो भी तुम बना रहे हो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम्म गो एंड सी, जो तुम टॉपिक से वीडियो बना रहे हो उस पर जो वीडियोस बनी है, ऐसा क्या किया उन्होंने दैट देयर वीडियोस वर्कड। इधर इट्स गुड, कमाल की थंबनेल, या फिर कमाल की पैकेजिंग, कमाल के टाइटल्स, या फिर इट्स ऑल अबाउट हम्म द कंटेंट। एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, पैकेजिंग पैकेजिंग, तुम्हारा कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। बिकॉज देयर इज व्हेन यू बिल्ड अ कनेक्शन विद द ऑडियंस, चाहे वो 100 लोग ही हम्म क्यों ना हो। बट वो जो कल्ट बनती है ना, कल्ट हमेशा कंटेंट से बनती है, ठीक है। हम्म फैन बेस तुम्हारे सब्सक्राइबर से बन जाएगी, जो कल्ट ऑडियंस होगी, जो मतलब जो तुम बोलोगे वो मान लेगी, वो हमेशा तुम्हारे कंटेंट की ऑथेंटिसिटी से बनती है। सो आई थिंक बीइंग ऑथेंटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। जो तुम बोल रहे हो, ऐसा कुछ मत बोलो जो तुम नहीं कर रहे हो, बिकॉज व्हेन समवन एक्सपोजेस यू, राइट, हम्म
It harms credibility. So I think these are the tips are, plus I think स्टार्ट आउट करने के लिए वेट नहीं करना चाहिए. पीपल वेट अ लॉट कि एडिटिंग सीख लूंगा तो स्टार्ट करूंगा, एडिटर हायर कर लूंगा तो स्टार्ट कर लूंगा, टीम बना लूंगा तब स्टार्ट कर लूंगा, पैसे आ जाएंगे तब स्टार्ट कर लूंगा, कॉलेज खत्म हो जाएगा तब स्टार्ट कर लूंगा. ऑल एक्सक्यूजेस. ठीक है, जिसको स्टार्ट करना होता है वो तुरंत स्टार्ट कर लेता है. देयर इज नो हम्म रीजन, बिकॉज इट्स अ रूल ना. जो तुम्हारी पहली वीडियो होगी और जो तुम्हारी 100 वीडियो होगी, फार बेटर होगी तुम्हारी 100 वीडियो फर्स्ट वीडियो से. नो मैटर तुम्हें फर्स्ट वीडियो में कितनी अच्छी एडिटिंग, कितनी अच्छी डिजाइनिंग आती है, बट एज यू गो थ्रू वो हमेशा 0.1 0.4 करके इंप्रूव करता जाएगा, इन कंपाउंडली वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा, राइट. सो आई थिंक हम्म स्टार्ट विदाउट डिलेइंग इज अ बेटर ऑप्शन टू गो एंड फिगर आउट बिटवीन द वेज. मेक सेंस, मेक सेंस. तो आपने इतने ये आपके बिजनेस पे इतने बड़े क्रिएटर्स के साथ आपने काम कर रखा है, तो आपको क्या लगता है वो बड़े क्रिएटर्स में ऐसा क्या क्वालिटी है जो उनको मिलियंस ऑफ फॉलोवर उसको फॉलो कर रहे हैं? यार आई थिंक वन इज दे आर बॉर्न इन्फ्लुएंसर्स, मतलब दे आर बॉर्न क्रिएटर्स. बहुत लोग ऐसे होते हैं, दे नो थिंग्स बट डू नॉट नो हाउ टू डिपिक्ट इट, उसको शो कैसे किया जाए, राइट. एंड कंटेंट क्रिएशन इज ऑल अबाउट शोइंग व्हाट यू नो, टीचिंग व्हाट यू नो. तुम्हें बहुत कुछ पता होगा बट यू वुड नॉट एबल टू एजुकेट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो बीइंग कंफर्टेबल एट कैमरा इज वन. दे आर वेरी गुड एट स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी सेल्स. स्टोरी लोगों को काफी पसंद आती है, राइट. If I put a video, right, how to survive layoffs, and if I हम्म put a video how I survived layoffs, the second video would get more interaction than the first video because it's very personalized and लोगों को हमेशा वो gossip कहानी में बहुत इंटरेस्ट होता है. तो आई थिंक हम्म देर वेरी वेरी गुड स्टूडियोज एंड देर वेरी हार्ड वर्किंग. लोगों को लगता है कि कंटेंट में क्या ही है, मतलब शूट करो, बैठो, खत्म. बट इट नीड्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ एज वेल, कि तुम कॉन्टिन्यूअसली कैमरे के सामने बैठ रहे हो फॉर वीक्स एंड मंथ एंड कंटेंट बना रहे हो, तो देर वेरी persistent with that. हम्म And I think one more reason is they're very patient. यूट्यूब की ग्रोथ आर नॉट इंस्टाग्राम की ग्रोथ की रील्स डाल के ग्रोथ आ गई, राइट. यूट्यूब की ग्रोथ टेक्स ईयर्स, इट टेक्स टाइम. एंड बहुत सारे लोग वो मिड में ही छोड़ देते हैं. तो आई थिंक बीइंग पेशेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल. लाइक बीइंग वेरी पेशेंट इज, तुम्हारी एक वीडियो चलेगी एंड उसके कंपाउंड होकर तुम्हारी 4 वीडियो जो अराउंड है वो भी चल जाएगी, बट इट वुड टेक टाइम टू बी एट दैट स्पॉट. आई थिंक द मेजोरिटी ऑफ द क्रिएटर्स जो भी बड़े हैं, दे आर देयर सालों से, राइट. यू टेक एनी नेम ऑफ क्रिएटर, दे स्टार्टेड इन 17 18 19, 3 4 साल हो गए हैं उनको, किसी किसी को 6 6 साल भी हो गए हैं, राइट. गीकी रंजीत को 10 साल हो गए हैं, राइट. सो आई थिंक being persistent and being patient is very very important apart from storytelling as well, क्योंकि storytelling and content making you learn, but being persistent and patient is what comes from inside. अगर तुम्हें बहुत हड़बड़ी है कि मेरे को एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, तो यूट्यूब तुम्हारे लिए है ही नहीं, छोड़ दो. यू आर नॉट फिट फॉर यूट्यूब. नॉट एवरीवन इज मेड फॉर यूट्यूब, नॉट एवरीवन इज. मेक सेंस. सो आई थिंक ये तो कुछ क्वालिटीज है उनमें which differentiates them from people. हम्म, जैसे ही आपने बिग क्रिएटर्स के साथ काम किया, तो उन्होंने आपके लाइफ में पर्सनली कैसे शेप किया है, आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया पर्सनली? See, when you work with big people in the industry, हम्म the first benefit you get is you get credibility. ठीक है. Now if I add an X name, right, जो बहुत बड़ा है in my portfolio, all of the people know them कि उनकी वीडियोस कैसी हैं क्या है, तो मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता to people I'm pitching to या फिर I'm talking to. तो it adds a lot of credibility to your work when you work with these people. Second, you learn a lot with them कि why they are here, क्या रीजन है उसकी वजह से, राइट. उन्होंने भी तुम्हारी तरह जीरो से स्टार्ट किया था, बट व्हाट टुक हिम और टुक हर एट द स्पॉट वेयर दे आर राइट नाउ. सो आई थिंक दैट एड्स अ मेजर रोल एज वेल. मैंने बहुत कुछ सीखा है बहुत काम करके, एंड सम ऑफ देम बिकम्स योर मेंटर. दे हेल्प यू एज वेल. तुम्हें कहीं पे दिक्कत आ रही है तो दिल बी सो हम्बल कि तुम्हें आके हेल्प करेंगी, दिव्य ऐसे नहीं होता, ये कर लो वो कर लो, ऐसे हो जाएगा. एंड बिकॉज दे आर बिग पीपल, आई मीन दे हैव अ लॉट ऑफ फॉलोइंग, उनकी कनेक्शन नेटवर्क काफी स्ट्रांग है.
इफ आई एम समवेयर एंड मेरे को कोई हेल्प चाहिए, तो आई कैन कॉन्टैक्ट देम एंड दिल गेट मी समवन जो मेरी हेल्प कर सकता है, राइट? Hmm. एंड या यू गेट फेम एज वेल, थोड़ा फेम मिल जाता है ऑफ वर्किंग विद दीज पीपल। एंड द थर्ड इज कि तुम्हें फिर लाइक वाइज लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो, नेटवर्क करते हो, बात करते हो, सो दैट इज वन। That's great. So, if we want to end this podcast episode, how do you want to end your podcast? What one key take away, or how you would end your this podcast? I think for everyone watching this podcast, whatever you have learned and not learned, I don't know, but whatever you, the points you want to take away, write those down and start implementing them. उसको एग्जीक्यूशन में लाओ। जस्ट पॉडकास्ट देख के, पॉडकास्ट पे मिलियन में व्यूज आते हैं, राइट? बट वाई आर दोज मिलियन पीपल नॉट सक्सेसफुल, राइट? बिकॉज उसमें से हजार लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट जो वो मिलियन लोग कंज्यूम कर रहे हैं वही सेम चीज हजार लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं, जस्ट दैट वो एग्जीक्यूट कर देते हैं, तुम एग्जीक्यूट नहीं करते हो। यू आर अफ्रेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग थिंग्स। तो आई थिंक whoever watching this, एग्जीक्यूट करना सीखो, फेल होना सीखो, फेल हो, एंड लाइफ में थोड़ा अनकन्वेंशनल चीजें करो। मतलब जो नॉर्मल रोड मैप बना हुआ है सबके लिए कि पैदा हो, स्कूलिंग करो, कॉलेज जाओ, जॉब करो, खत्म। कुछ अनकन्वेंशन करो एंड ट्रैवल अ लॉट। जहां भी तुम्हें मौका मिले, ट्रैवल अ लॉट। आई एम बिग बिग फैन ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवल अ लॉट, वहां पे तुम बहुत डिफरेंट लोग से मिलोगे, गेट डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एंड जब तुम्हारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है ना, तो यू टेक डिसीजंस वेरी फर्मली। बहुत डिफरेंट चार पांच तरीके से सोच के तुम डिसीजन लेते हो। एंड ट्राई टू पुट योर सेल्फ आउट ऑन द इंटरनेट, ट्राई टू पुट योर सेल्फ आउट ऑन द पब्लिक जब भी तुम काम कर रहे हो, बिकॉज तुम अपने आप को नहीं बेचोगे तो तुमको कौन बेचेगा, राइट? नो बडी सेल्स फॉर यू, यू हैव टू सेल योर सेल्फ। तो पुट योर सेल्फ आउट कि लोगों को पता चले एग्जैक्टली तुम हो कौन, राइट? तो दैट इज वन थिंग, पुट योर सेल्फ आउट। आई थिंक आई रिपीट दिस आंसर, राइट? इंटरप्शन हो गए थे। सो आई थिंक पुटिंग योर सेल्फ आउट ऑन इंटरनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर तुम खुद को नहीं बेचोगे तो तुम्हें कोई नहीं बेचेगा, राइट? यू हैव टू सेल योर सेल्फ, यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ। टू नॉट बी अफ्रेड ऑफ पुटिंग आउट योर सेल्फ ऑन द इंटरनेट। अपने काम को इंटरनेट पे डालो, तुम्हें क्या आता है उसको इंटरनेट पे डालो, इवेंचुअली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आ जाएगी, राइट? So that is one thing I think people should do. That's a great ending, Divya, and thank you. Thanks a lot. I personally learned a lot of things from you. I loved this podcast. I was very like काफी मजा आ गया इस podcast को सुनते हुए जब मैं आपके साथ लाइव कन्वर्सेशन कर रहा था and I was मतलब मैं सोच रहा था कि how things पर्सपेक्टिव कैसा है लोग कैसे सोच रहे हैं एंड काफी रियलाइजेशन हुई. Thank you so much on coming on this White Collar podcast.